हाय गाइस, वेलकम बैक टू लीगलॉजी बाय कोमल। आज की वीडियो का टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू लॉ ऑफ एविडेंस। द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA replaces the Indian Evidence Act 1872, bringing significant reforms to align with technological advancements and modern legal needs. Below is a detailed comparison between the old and new laws of evidence. First distinction is based on structure and terminology. Indian Evidence Act 1872 IEA enacted by the British using outdated legal terms, whereas Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 BSA eliminates archaic terminology, replacing it with simple and modern legal language. IEA में कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश टर्म्स यूज की जाती थी, लेकिन अब BSA में सिंपल इंग्लिश टर्म्स का यूज किया गया है. IEA consisted of 167 sections, whereas BSA has 170 sections with some restructured and reworded provisions. IEA में 167 sections थे, whereas BSA में 170 sections हैं जो कि restructure किए गए हैं. In the case of Lilly Thomas versus Union of India 2000, the Supreme Court emphasized the need for modernizing old colonial laws to reflect contemporary Indian realities. The BSA follows this approach. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलोनियल लॉज को अपडेट करो. BSA ने यही किया है. सेकेंड इज एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एविडेंस, मोबाइल, ईमेल, सोशल मीडिया प्रूफ वगैरह. IEA recognized under Section 65B but with strict requirements like a mandatory certificate, whereas the BSA broadens the scope of electronic evidence and simplifies admissibility conditions. IEA में डिजिटल प्रूफ जैसे व्हाट्सएप चैट्स देने के लिए सेक्शन 65B सर्टिफिकेट चाहिए होता था, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट था. लेकिन अब सर्टिफिकेट की जरूरत कम, डायरेक्ट सोशल मीडिया चैट्स, ईमेल्स, ब्लॉकचेन भी प्रूफ माना जाएगा. The IEA did not explicitly mention any of these forms, whereas BSA clearly includes emails, social media chats and blockchain records as admissible evidence. अब जो हमारा BSA है उसमें अब सर्टिफिकेट की जरूरत कम, डायरेक्ट सोशल मीडिया चैट्स, ईमेल्स, ब्लॉकचेन भी प्रूफ माना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई फ्रॉड का ईमेल है, अब उसे आप कोर्ट में आसानी से पेश कर सकते हो. In the case of Anwar PV versus PK Bashir 2014, the court ruled that electronic records require strict compliance with Section 65B. The BSA simplifies these conditions, making electronic evidence easier to present under Section 63 BSA. In the case of Arjun Panditrao Khotkar versus Kailash Gorantyal 2020, the Supreme Court reaffirmed the need for a certificate under Section 65B, which the BSA relaxes in specific cases. Reformation of hearsay rule and secondary evidence. Secondary evidences जैसे Xerox, cloud records, etc. IEA में hearsay evidence generally inadmissible except in cases like dying declarations, whereas BSA retains hearsay restrictions but provides clearer exceptions and improves clarity in documentary evidence. Hearsay evidence IEA में जनरली इनएडमिसिबल थी एक्सेप्ट डाइंग डिक्लेरेशन, लेकिन जो BSA है वो क्लियरर एक्सेप्शंस बताता है और क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है इन सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एज वेल. IEA में सेकेंडरी एविडेंस रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद प्राइमरी एविडेंस रूल्स, लेकिन जो BSA है वो अलाउ करता है जेंडर फ्लेक्सिबिलिटी इन एडमिटिंग फोटोकॉपीज, डिजिटल रिकॉर्ड्स, क्लाउड बेस्ड एविडेंस. यानी कि जो IEA है उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो जेरोक्स सबमिट करना मुश्किल था, लेकिन अब फोटोकॉपी, क्लाउड स्टोरेज, गूगल ड्राइव, डिजिटल स्कैन्स भी प्रूफ के तौर पर एक्सेप्ट होंगे. In the case of Ram Janki ji Deities versus State of Bihar 1999, the court held that hearsay evidence is unreliable, but the BSA introduces clear exceptions where it can be considered. BSA clear exceptions बताता है कि कहाँ पे hearsay evidence लिया जा सकता है और कहाँ पे hearsay evidence नहीं लिया जाएगा. Further is treatment of confessions and witness testimonies. जुडिशियल एंड एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशंस के केस में IEA सेक्शंस 24 से 30 dealt with confessions but lacked clarity on digital confessions, whereas BSA 2023 retains confession principles
but includes modern methods like video recorded confessions. In IEA, there was no specific provision for witness protection, but BSA introduces better safeguards against coercion and external influence. पुराने आईईए में वीडियो प्रूफ नहीं चलता था, विटनेस को कोई सेफ्टी नहीं थी, लेकिन जो बीएसए है उसमें वीडियो रिकॉर्डेड कन्फेशन अलाउड है, विटनेस को पूरी प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलेगी धमकियां भी रोकने के लिए. In the case of Selvi versus State of Karnataka 2010, the court ruled that narco-analysis and brain mapping violate self-incrimination rights. The BSA strengthens protection against involuntary confessions. इस केस में कोर्ट ने फोर्स्ड नार्को टेस्ट बैन किया और न्यू लॉ में इसको स्ट्रेंथन करता है. और हाँ गाइस, नोट्स के पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हो. Further is relevance of presumptions and burden of proof. Section 79 and 80 dealt with presumptions related to documents, whereas BSA expands presumptions for digital contracts, emails, and cloud-based records. Burden of proof in IEA strictly required proof in physical form, whereas BSA allows digital evidence to fulfill burden requirements, easing procedural hurdles. यानी कि जो आईईए था उसमें फिजिकल डॉक्यूमेंट्स ही सबूत थे, लेकिन जो नया लॉ है उसमें डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स, ईमेल्स भी प्रूफ हैं. फॉर एग्जांपल, अगर ऑनलाइन एग्रीमेंट है वो भी अगर अब आप कोर्ट में दिखाओगे तो वो भी चलेगा. इन द केस ऑफ शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ HP 2018, the Supreme Court relaxed certificate requirements for electronic evidence in some cases. The BSA codifies this approach. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल प्रूफ को एक्सेप्ट किया, अब बीएसए ने इसी को ऑफिशियल बनाया है. चेंजेस इन रेलेवेंसी ऑफ एविडेंस एंड मॉडर्नाइज्ड प्रोविजंस. Relevancy of evidence in IEA used strict definitions that often excluded modern forms of evidence, but the BSA expands the scope to include modern technologies and digital evidence. Legality of illegally obtained. No clear provision on whether illegally obtained evidence is admissible, whereas BSA provides clear guidelines on when illegally obtained evidence can be used. अगर पुलिस ने इलीगल तरीके से प्रूफ जमा किया, जैसे फोन हैक करके, तो कोर्ट कंफ्यूज होती थी आईईए के टाइम पे, लेकिन जो बीएसए है वो क्लियर गाइडलाइंस देता है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट है, जैसे टेररिस्ट केस, तो इलीगल प्रूफ भी चल सकता है. In the case of Kartar Singh versus State of Punjab 1994, the Supreme Court discussed the balance between fairness and using illegally obtained evidence. The BSA introduces a structured approach. इस केस के हिसाब से बैलेंस रखना जरूरी है. Fair trial and accused rights. IEA focused on procedural fairness but lacked digital safeguards, whereas BSA strengthens fair trial principles, ensuring protection of digital privacy and rights of the accused. Cross-examination and digital testimonies in IEA required physical presence for witness examination, whereas BSA allows video conferencing and digital submission of testimonies. अब नए बीएसए में गवाह वीडियो कॉल पे भी बोल सकता है, अक्यूज्ड का डिजिटल प्राइवेसी प्रोटेक्ट होगा. In the case of Menka Gandhi versus Union of India 1978, the Supreme Court emphasized natural justice and due process. The BSA strengthens these by ensuring digital security and fair trial rights. मेनका गांधी केस 1978 के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए BSA फेयर ट्रायल को प्रमोट करता है. Concluding this, the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 modernizes India's evidence law by recognizing electronic and digital evidence, simplifying the admissibility of secondary evidence, improving protections for witnesses and accused persons, enhancing judicial discretion while maintaining fairness. So guys, BSA 2023 ने एविडेंस लॉ को डिजिटल एज के हिसाब से मॉडर्नाइज कर दिया है. अब मोबाइल चैट्स, ईमेल्स, सब कुछ प्रूफ है. जेरोक्स और क्लाउड रिकॉर्ड्स भी एक्सेप्ट होंगे. विटनेस को सेफ्टी और अक्यूज को डिजिटल राइट्स भी मिलेंगे. Thus, we come to an end. आज की वीडियो के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Do not forget to like, comment and share this video with your friends. Do subscribe Legalogy by Komal.